of the capillaries. Okay, all that we have completed. And then blood also we discussed, and I told you that जितना अपन ने 9th में पढ़ा है वो पूरा आप पढ़ लीजिए. That is composition of blood, that what is the percentage of plasma, what is the percentage of the blood cells. ठीक है, वो सब अपन डिस्कस कर चुके हैं. And the functions and the structure of the three blood cells, that is your WBC, RBC, and the blood platelets. Okay, now today we are starting with the clotting of blood. I will tell you the mechanism of clotting of blood. Okay, so now the screen is there on. Can you see my screen, children? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, ठीक है. So now we are starting with that how the clotting. अब ये बात समझ लीजिए that clotting of blood is a very important process. Why? Can anyone tell? Ma'am, because if there is any leakage of blood, then blood will keep on हाँ, flowing and there will be huge blood loss. हाँ, and which may lead to death. Yes. Okay, so if the clotting of blood is not there, remember children, the person can bleed to death. Okay, if a small cut or injury is there, remember कोई भी cut injury होती है तो you know that for some time so the blood flows, and after that you find that the blood that it seals, the blood itself seals that injury, and once it is sealed the further flow of blood is stopped. So that process of clotting of blood or coagulation of blood is very important. अब वो होता कैसे उसके लिए अपन को समझ लेना है. Now you know which cells help in the clotting of blood. ये तो सबको पता है. Platelets. 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 हाँ, Platelets. so the platelet, correct. So this everyone knows that platelets play a very important role in the clotting of blood. Now how it takes place, उसका mechanism बस equation form में आप लिख लीजिए and you will be able to understand it. Okay. Now, at the site of injury, remember, children, that blood vessels get injured. Okay, जैसे ही blood vessels injured होते हैं मतलब कि अंदर blood present है तो blood cells भी injured हो जाएंगे. तो the blood, there will be disintegration of the at the site of injury. कहाँ पर हो रहा है? Where this will happen? Site of injury. So you remember blood disintegration of blood platelets. So whenever any injury is there, सबसे पहले तो tissues cut हुए, फिर blood vessels, capillaries cut हो गए, capillaries के अंदर blood है. Okay, and inside the blood the platelets are there. So there will be disintegration of the blood platelets. Now what you do? Put an arrow. Everyone can see my screen now. Ma'am, disintegration का मतलब क्या है? Yeah. Disintegration. Means breaking. Okay, disintegration means breaking. The blood platelets will break. Now, when the blood platelets will break, now what you can do, children? यहाँ पर arrow के ऊपर लिख लो at the site of injury. Okay, at the site of injury, bracket के ऊपर नीचे मिला के लिख लीजिए. Okay, now what will happen? जैसे ही blood platelets break होते हैं, they disintegrate. So now what will be produced? It will produce thromboplastin. Okay, it will produce thromboplastin. It is also known as thrombokinase. Okay, plus you will find the lipids will be produced. Okay, plus you find the blood protein, that is globulin, will be produced. Okay, globulin will be produced. Is it clear this much, everyone? This is your first step as the injury occurs. Okay, whenever there will be injury, there will be disintegration of the blood platelets, and this will result in the production of the thromboplastin, lipids, and the globulins. Okay, now what will happen?
In the presence of thromboplastin, now write down the next equation. Ma'am, what are In these the thromboplastins and globulin? thromboplastin is one enzyme, children. ओके, ब्लड प्लेटलेट्स के ब्रेक होने से थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोड्यूस होता है. Followed, Sneha, and it And is a globulin? type. Globulin is a blood protein. Okay. ग्लोब्यूलिन इज अ ब्लड प्रोटीन. तो ये सब प्रोड्यूस होते हैं. फिर ब्लड प्लाज्मा में चिल्ड्रन व्हाट इज प्रेजेंट? प्रोथ्रोम्बिन इज प्रेजेंट. Prothrombin is present. Now, the prothrombin in the presence of this thromboplastin will get converted into thrombin. Followed, so on top of the arrow, you write down children thromboplastin और थ्रोम्बोकाइनेज. इसके दोनों नाम लिख लीजिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन ऑब्लिक थ्रोम्बोकाइनेज. ओके, सो Ma'am, नाउ please repeat. हाँ, आई एम रिपीटिंग कि ब्लड, अगर ब्लड प्लेटलेट्स ब्रेक होंगे तो थ्रोम्बोप्लास्टिन विल बी प्रोड्यूस्ड. आप बस इसी का इंपॉर्टेंट याद रखो. लिपिड्स और ग्लोबुलिन को भूल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है. अब थ्रोम्बोप्लास्टिन के प्रेजेंस में जो प्रोथ्रोम्बिन ब्लड प्लाज्मा में ऑल मैम, उसका जो दूसरा नाम था वो भी बता दीजिए एक बार फिर से. I'm writing, wait. Okay, you can note down. Thrombokinase. Okay, the other name of thromboplastin is thrombokinase. Should I write it here only? That will be better. आप लोग should confuse होंगे यहाँ पर देख के. Okay, इसको अपन क्या बोलते हैं? Thrombokinase. Now is it okay? Ma'am, it is throbo or thrombo? Wait, I am writing. M is missing. Thrombokinase. Clear? Everyone understood एरो or में क्या not? लिखना है मैम? एरो तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में. आप तो ना अपने कॉपी में एक साथ लिखो. ओ, व्हाट इज हैपनिंग? ये उधर ही क्यों नहीं जा रहा है? Again it's coming out. Okay, because it is showing here, that's why. ठीक है. So you write it in one line. The disintegration of the blood platelets will produce what? Will produce what? Thrombokinase. Thromboplastin plus lipids plus globulin. Now, what reaction will occur? The Ma'am, next, prothrombin and thrombin भी blood enzyme है. the प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन भी एंजाइम्स हैं. they are also the enzymes. Okay, so prothrombin is the inactive form. Okay, now in the presence of the thromboplastin, you find the prothrombin will get converted into active thrombin. Will get converted into active thrombin. So what you do, prothrombin के नीचे लिख दो inactive, and below the thrombin you write down active. This is inactive. These things are present in the blood plasma. Okay, now what will happen? The next reaction, अब thrombin बन गया. अब thrombin के presence में you find another blood protein, fibrinogen. Fibrinogen will get converted into fibrin. It is a protein. Fibrinogen is a protein. Okay, so fibrinogen, below the fibrinogen, children, write down, it is in the sol form. इसके नीचे क्या लिख लो? Bracket में you write down sol. That is in the sol state or the solution form. Okay, and below the fibrin, you write down gel. Okay, so did you get it? बस इतने reactions होते हैं clotting के समय. अब क्या क्या हुआ? First what? Whenever there will be injury, so there will be disintegration of blood platelets. Now try to learn it. Blood platelets will break, thromboplastin will be produced, or thrombokinase will be produced.
In the presence of thrombokinase, the inactive prothrombin will get converted into active. Now, in the presence of thrombin, fibrinogen, which was present in the small state in the plasma, Ma'am, your voice is मैम not आपकी clear. what मैम योर वॉइस मैम इज आपकी ब्रेकिंग. आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है. अरे तो समझ ही नहीं आएगा. Okay. Okay, I'll change the. Can you hear me? Voices. Can you hear my voice, children? यस Yes, मैम. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we can. Okay. So समझो कि platelets when they'll break, they will form the thromboplastin or thrombokinase. In the presence of this enzyme, the prothrombin will get converted into thrombin. Okay, and in the presence of thrombin, so where you are writing prothrombin and then arrow and thrombin, on top of this arrow you write down thrombokinase. And when you write down fibrinogen into fibrin, so on top of this arrow you write down thrombin. So which was in the Thrombin. solution form will get converted into the gel form. Okay, so gel means what? Anything will stick into it. Okay, so when this gel will be formed, you find that in that gel, that is the fibrin, in the fibrin, which is a gel, you find the blood cells will get entangled. Okay, blood cells will get entangled and it will form the clot. Okay, so on top of this arrow, fibrin के बाद वाले arrow पर आप लिख लो what you write down below that. Blood cells get entangled. Cells, so you increase the size of the cell. Blood cells get entangled means फंस जाते हैं. Did you get it, children, everyone? Okay, तो आप थोड़ा ऊपर लिख दो Yes, ma'am. लाइन के दैट इज एरो अब लिखो कुछ थोड़ा अब नीचे लिख दो तो ब्लड सेल्स ऊपर लिख देना गेट एंटेंगल्ड नीचे लिख देना and that way you get a clot and that clot will seal the Injury. जल्दी बोल injury will seal the injury. Stop the blood जैसे injury flowing. seal हो जाएगी cut so the blood flow will stop. Noted everyone? Yes, ma'am. Yes Yes, or no? ma'am. यस मैम. Okay, Yes, about ma'am. blood clotting. Yes, ma'am. So with this we have completed what is clotting of blood. Okay, Clot. now lymphatic Clotting. system के लिए थोड़ा सा बस आप लिख लो what you have to remember. ज़्यादा डिटेल में अपन को नहीं जाना है तो I am telling you what is lymphatic system. Remember children, as you know that the transportation of the different substances in our body goes through the blood or the blood circulatory system. Same way we have another fluid which is known as the lymph. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. So there is another system जिसको अपन lymphatic system बोलते हैं. अब उस lymphatic system के components लिख लो. What are the components of it? As we did, blood circulatory system components were the heart, the blood vessels, and the blood. Same way here, we find the first component of your lymphatic system is the lymph vessels. जैसे blood vessels हैं, ऐसे ही lymph vessels हैं. Okay, so they are running in the whole body.
ओके द ब्रांचेस आर देयर, जैसे बिल्कुल नेटवर्क अपना ब्लड वेसल्स का है, reach in each and every cell of the body. Same way, there are the fine vessels through which the lymph is flowing. So you call them lymph vessels. And the second component is the lymph node. Lymph node. Okay, so lymph node children, they are the muscular node. They are muscular node. Okay, which synthesize lymphocytes, which synthesize lymphocytes. The cells present in the lymph, they are known as lymphocytes, and they help in developing immunity. What is the function of the lymphocytes? Help in developing immunity. Develop immunity. Is it very clear this much? Now we'll take up the third component. So what is the third component? That is lymph. The third component is lymph. मैम मस्कुलर नोड का मीन मतलब क्या है? नोड मतलब कि द ग्रुप ऑफ द सेल्स. ओके मसल्स है वो, थोड़े से मसल्स का गुच्छा समझ लो. दैट इज अ मस्कुलर नोड. And in those muscular node only, the lymphocytes will be synthesized. So lymph, remember children, it is straw colored. It is a straw colored fluid. Okay. मैम स्ट्रॉ कलर क्या होता है? Light yellow. येलो. What is the meaning of straw? Light yellow. So you can put it in bracket. Straw colored means light yellow color. Okay, so it is a light yellow colored fluid, and you know how it is formed? It is formed by the filtering out, by the filtering out of plasma through fine blood capillaries, through fine understood all of your through fine blood Yes, ma'am. capillaries. मैम वाइट ब्लड सेल्स भी तो इम्यूनिटी बनाते हैं ना? हाँ बिल्कुल सही है, वो भी वही करते हैं. तो फिर Okay, so लिम्फोसाइट्स now की क्या जरूरत है? lymphocytes, children, lymphocytes are type of WBCs only. Okay, lymphocytes are the टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी. they are the types of WBCs. Okay, तो अपन इतना डिटेल में नहीं जा रहे. कॉम्पोजिशन में WBCs के बहुत सारे टाइप्स है. ओके, यू डोंट हैव टू स्टडी दैट मच, बट ये याद रखना है कि आप थोड़ा सा समझ लो इधर कि lymph, ये तो I have written and then you have also noted it is formed by the filtering out. So try to understand when the blood is flowing through with the pressure through the fine capillaries. उस समय क्या होता है कि ब्लड कैपिलरी से कुछ ब्लड प्लाज्मा ना बाहर चला जाता है, और बाहर जाता है वेन वी से, तो बाहर कहाँ जाएगा? मीन्स इट विल कम इनटू द स्पेसेस between the cells. It will come into the spaces between the cells. Okay, and that is why lymph को अपन interstitial fluid भी बोलते हैं. What you call it? इंटरस्टिशियल. Interstitial. Interstitial fluid. हाँ, lymph is also known as, इधर पर लिख लो स्टार्टिंग में, known as interstitial fluid. है सेल्स के बीच में. ओके, और कहाँ से आ जाता है? ब्लड कैपिलरीज के बाहर आ जाता है. तो ब्लड कैपिलरीज दे आर वेरी फाइन, तो दे आर थिन वॉल्ड, यू नो दे आर मेम्ब्रेनस,
लेकिन वो इतने भी छोटे, मतलब इतना बारीक है कि उसके बाहर ना आरबीसीज नहीं आ पाते। ओके, ओनली सम ऑफ द डब्ल्यूबीसीज, मतलब कि लिम्फोसाइट्स बाहर आ जाते हैं, ब्लड प्लाज्मा बाहर आ जाता है। तो आरबीसी जब नहीं आएंगे तो फिर वो रेड कलर तो नहीं होगा, प्लाज्मा तो येलोइश कलर का होता है, इसलिए लिम्फ भी येलो कलर का है। इज इट क्लियर? So it will have some small proteins and it has got the lymphocytes. So composition समझ में आ गया? What is the composition of lymph? मैम लिम्फ का काम क्या हाँ, है? वही बताते हैं। अभी इतना समझ में आया कि नहीं? मैम Yes, प्लाज्मा ma'am. फिल्टर आउट कैसे होता है? मेम्ब्रेन के बाहर प्रेशर से जा रहा है तो वो मेम्ब्रेन तो है, कैपिलरीज की थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब कुछ चीज उसके अंदर से प्रेशर से जाएगी, लिक्विड मतलब ब्लड जा रहा है, तो वो ना बाहर प्लाज्मा बाहर हो जाता है, समझ गए? इट फिल्टर्स आउट। ओके मैम। बीच में से फिर लिम्फ वेसल्स में चला जाता है, ठीक है। और लिम्फ वेसल्स तो ये ध्यान रखना है कि लिम्फ पूरा सर्कुलेट होते होते आखिरी में वो ब्लड में ही पहुंच जाता है। तो दे आर कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स ओनली। ब्लड से बाहर आया फिर वापस ब्लड में ही जाता है। राइट डाउन। मैम आपकी आवाज अटक रही है। अटक रही है। आई एम रिपीटिंग नाउ। फंक्शंस, ओके। व्हाट आर द फंक्शंस? नंबर वन लिख लो, हेल्प्स इन Ma'am, your voice is not transporting clear. lipids. अच्छा, what are the मैम समझ नहीं आया, आवाज कट रही है मैम। अच्छा चलिए Yes, हम ma'am. repeat करते हेल्प्स हैं। इन ट्रांसपोर्टिंग द लिपिड्स। Green visible? Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am. हाँ, Yes, ये ma'am. ठीक है। तो अभी फंक्शन पहला भी हम रिपीट कर रहे हैं। लिम्फ अच्छे से समझ लो, हाउ द लिम्फ इज फॉर्म्ड। लिम्फ इज फॉर्म्ड बाय द फिल्टरिंग आउट ऑफ द प्लाज्मा दैट इज द ब्लड प्लाज्मा, ओके, व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द फाइन कैपिलरीज। ओके, तो कैपिलरीज के बाहर फिल्टर होके वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में पहुंच जाता है, and that only then enters into the lymph vessels. The lymph vessels के through it is circulated in the whole body. Okay, now it will, what will be the composition? So you say it is a fluid, yeah, light yellow in color, contains the small blood proteins and the lymphocytes and the node RBCs. Okay, then functions. It helps in transporting the मैम lipids. कंटेन क्या क्या करता है? Contains plasma, small proteins, and lymphocytes. Small proteins and lymphocytes. Our next function helps in developing immunity. मैम ये लिम्फ के फंक्शन है ना? हाँ, ये lymphatic system के फंक्शन बोलो या lymph के functions बोलो, you will have to write down same thing. Okay, it helps in developing immunity. मैम लिम्फोसाइट्स तो लिम्फ नोड में प्रोड्यूस हुआ था ना? हाँ बिल्कुल सही है, तो इसलिए वो लिम्फेटिक, लिम्फ में तो प्रेजेंट है ना, प्रोड्यूस होके वो कहाँ आएगा? लिम्फ नोड्स, रिमेंबर, दे आर प्रेजेंट एट डिस्टेंट इंटरवल्स, एट डिफरेंट इंटरवल्स इन द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ वेसल्स के बीच बीच में ही ये मस्कुलर नोड्स प्रेजेंट रहते हैं, अलग अलग डिस्टेंस पर। तो उधर पर लिम्फोसाइट्स बनते रहते हैं और बन बन के वो किस में आ जाएंगे? बन के कहाँ पहुंचेंगे? lymph vessels. लिम्फ वेसल्स के अंदर। और लिम्फ वेसल्स के अंदर है क्या? हाँ, लिम्फ Lymph. वेसल्स के अंदर लिम्फ है। Fluid. हाँ, लिम्फ वेसल्स के अंदर लिम्फ है। तो उस लिम्फ में
ये प्रेजेंट है, so that way it is helping in developing immunity. Okay, then other points you write down that it provides or synthesizes, you can write down, lymphocytes. Lymphocytes. It provides lymphocytes. ओके, तो ये अल्टीमेटली फिर ब्लड में पहुंच जाते हैं lymphocytes. अंडरस्टूड ना? सो दे आर सिंथेसाइजिंग द lymphocytes. So that's why तो it's मैम ये saying ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है? transport lipids. It is transporting lipids. Okay, बाकी सारे nutrients, children remember, are transported by the blood vessels. लेकिन जो हमारा lipids है, it is transported through the lacteals, that is the lymph vessels. Okay, blood will not transport the fats from one part of the body to the other. Okay, the lipids are transported through the lymph vessels or lacteals. Okay, your small intestine, absorption of the food occurs in the small intestine. And where it is absorbed? Small intestine में ऐसा क्या है? जल्दी बोलो. Villi. विलाइस. Villi. Okay, so these villi, they are supplied with the blood capillaries also, and they are supplied with the lacteals also. तो जितना भी lipids होगा वो lacteals में diffuse हो जाएगा, and the other components, that is your glucose, then what else? मोनोसैकेराइड्स के नाम बोलो जल्दी से, जो सिंपलेस्ट अपन का डाइजेशन के बाद में क्या क्या मिलता है. माल्टोज देता अपन को क्या? माल्टेज. नहीं, माल्टोज Maltase breaks maltose. ग्लूकोज, ब्रेक करेगा. हाँ, तो ग्लूकोज मिलेगा. वेरी. Glucose, हाँ, फिर सुक्रोज. glycogen, अमीनो एसिड, हाँ, वेरी. ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल. अभी आपने कार्बोहाइड्रेट के सिंपलेस्ट फॉर्म्स नहीं बताए डाइजेशन के बाद जो अपन को 3 मिलते हैं. ग्लूकोज, अमीनो अमीनो एसिड, एसिड, अरे अमीनो एसिड तो प्रोटीन है ना. amino acid protein. हाँ, वो तो प्रोटीन के डाइजेशन से मिलेगा. आई एम टॉकिंग कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से क्या मिलेगा आपको? स्टार्च. स्टार्च तो कॉम्प्लेक्स है ना. सिंपलेस्ट आफ्टर डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो याद करो. अब पेजेस टर्न करने पड़ेंगे अगर वही नोटबुक. Fructose हाँ. and lactose. हाँ, Lactose, अभी फिर से अच्छे से देखो. galactose. हाँ, गैलेक्टोज. नोटबुक में टर्न नहीं करता. आप लोग लिखते इसी कॉपी में हो कि कहीं कहीं भी लिख के रख देते हो? एक ही नोटबुक रहती है सामने की नहीं? एक ही रहती है. हाँ, तो एक ही साथ सामने रहती है तो जल्दी से पेजेस टर्न कर लिया करिए. 1 सेकंड लगता है पेजेस, अगर ये पता है कि कहाँ लिखा था तब तो इट इज वेरी क्विक. बट इफ यू डोंट नो कि कहाँ लिखा, पता नहीं, तो फिर नहीं, आप बता नहीं सकते फिर देख के भी. मैम आपने लिम्फ वेसल्स को और एक और क्या बोला था? लैक्टियल्स. आई हैव नोटेड आल्सो, सी हियर. स्क्रीन पर से कॉपी कर लो. lymph vessels are also known as lacteals. Okay, so they help in the transportation of the lipids. So your fatty acids will be transported through these only. Okay, तो वो सारे विलाय में फिर डिफ्यूज इसके अंदर होंगे. मैम सो लिम्फ जो है वो ब्लड में ही होता है, फिर वो कैपिलरी से बाहर चला जाता है, फिर लिम्फ हाँ, वेसल्स के थ्रू वापस ब्लड में आ जाता है. नहीं, ये मत बोलना स्नेहा कि लिम्फ ब्लड में रहता है. नहीं, ब्लड में तो प्लाज्मा रहता है, लेकिन जब वो प्लाज्मा फिल्टर होके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में पहुंच जाता है या इंटरसेल्युलर स्पेसेस में पहुंच जाता है, तब अपन उसको लिम्फ बोलने लगते हैं. ओके, अच्छा. ठीक है. तो फिल्टर आउट ब्लड में से क्या क्या हो जाएगा? प्लाज्मा बाहर चला जाएगा, छोटे छोटे प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन के बाहर हो जाएंगे, लिम्फोसाइट्स बाहर हो जाते हैं. ओके. ओके.
तो बस उतने 3 चीजें बस उसमें प्रेजेंट रहती है। ओके, और lymph हमारा क्योंकि lymphocytes प्रेजेंट है, so that is why it is helping in developing immunity। और lymph nodes में synthesis भी इनका होता रहता है, so that is why they are providing more of the lymphocytes to the blood। Okay, and they help in the transportation of the lipids। Then now, Yes, ma'am. हाँ, तो इतना अपन का lymphatic system भी खत्म। Now our transportation in the, Ma'am, yes, ma'am, maybe in book it was written that lymph जो extracellular space में extracellular fluid जो थोड़ा बहुत बाहर आ जाता है उसको वापस अंदर भेज देता है। हाँ, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी बोलते, तो तीनों नाम याद रखना। ओके, यू रिमेम्बर ऑल द 3 नेम्स। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्योंकि वो सेल के बाहर है। Okay. ओके, तो नाउ एवरीवन ट्राई टू रीड द लिम्फेटिक सिस्टम। जितना बुक में दिया है ना वो सारे सेंटेंसेस अच्छे से रीड करना। वेरी लेस इट इज गिवन। ओके, सो रीड इट नाइसली एंड देन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी सेंटेंस तो फिर से पूछना, फिर हम और एक वीडियो दिखा देंगे आपको। ठीक है, तो यू कैन सी। सो आई विल फिनिश अप क्विकली नाउ। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ओके, तो अब जल्दी से लिख लो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। वी आर स्टार्टिंग विद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। अब एक बात बताइए कि इन द प्लांट्स यू ऑल नो अ लॉट। इन द प्लांट्स व्हाट ऑल थिंग्स नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड? जल्दी बोलो। Water, minerals, and food synthesized. हाँ, बिल्कुल सही। ओके, तो जल्दी से लिख लीजिए substances which have to be transported in plants। So you said water, क्योंकि water तो soil में रहता है, and then absorbed by the Roots. Glandules. absorbed by the Roots. Foods. roots। हाँ, absorbed by the roots। ठीक है, फिर water के साथ ही क्या चीज चली जाती है? Minerals. Minerals. Minerals also go with the water। ठीक है, and then Salt. हाँ, वो सारे चीज, वो तो सब वही चीज है। And then what else? Now the other thing The you know, food. food। Food is synthesized where? Leaves. Leaves. तो से तक जाना होता है। All parts of the plant. All the और parts of the plant. मतलब from the leaves the food has to be taken till the roots, because each cell of the plant body will be needing the food, क्योंकि उसका ही ऑक्सीडेशन होगा and then only the energy will be produced, and energy is needed by all the cells of the plant body। ठीक है, so you have done now। So this way you find that there are two systems in the plants which will be helping in the transport of these 3 substances। So Xylem number, and phloem. xylem and phloem। Okay, so now we will do first the transport of, sorry, transport of water and minerals। Now try to understand, children, this transport of water and minerals, because the minerals are dissolved in the water and that becomes a solution. We call it a sap। What you call it? That. Sap। Okay, so the water and minerals जो dissolved हो गया वो अपन उसको बोलेंगे sap। So this process is known as, remember children, ascent of sap। What is it known as? What is it? Ma'am, what is that? Ascent of sap। The transport of water and minerals is known as ascent of sap। And what is sap? What is sap? Water and Water और mineral. mineral। ये डैश हटा के आपको ना ब्रैकेट कर देती हूँ, तो आई थिंक दैट विल बी क्लियरर। ओके, Yes. ये जो वाटर और मिनरल्स का सोल्यूशन दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं अपन सैप। ओके, नाउ you know from where to where the water minerals will be transported? Roots to leaves. हाँ, okay, it will be, this transport will be going on from roots to leaves। Sorry, means the
till the top of the plant. अब मतलब वो नीचे से ऊपर जा रहा है. Yes or no? Yes, Yes, ma'am. ma'am. It is going from down to the top. इसीलिए अपन बोले ascent. What we say? Ascent. 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 Ascending, descending, you have learned. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, ma'am. भूलेंगे तो नहीं. No, ma'am. हाँ, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ, डिसेंडिंग मतलब ऊपर से नीचे, isn't it? So that's why we are calling this phenomenon, this process of transport of water and minerals as ascent of sap. What is it called? Ascent of sap. Ascent of चलिए, अब अपन पढ़ेंगे कि the theory which explains this process of ascent of sap. Okay, so the theory which explains this process of ascent of sap, that is the transport of water and minerals from roots to the leaves, is known as, or is the transpiration pull theory. Okay, transpiration pull theory or cohesion adhesion. ओके, लिखते जाओ जल्दी जल्दी. ओके, कोहेशन एडहेशन, यहाँ पर ना पुट हाइफन. कोहेशन एडहेशन टेंशन. ओके, कोहेशन एडहेशन टेंशन theory. So what is the name of this theory which explains the ascent of sap? Transpiration pull. Transpiration pull theory or cohesion, adhesion, tension theory. हाँ, ओके, learned the name everyone. Yes, ma'am. मैम ऐसा नाम क्यों रखा? ऐसा नाम क्यों रखा अभी समझ में आ जाएगा. Okay, why you are calling this the transpiration pull? Because if you remember these names ना तो पूरा theory भी आप बता सकते हो. Okay, now we'll see what happens according to this theory. Now according to this theory, the water is transported from the roots to the top of the plant. और you know that कितने ऊंचे ऊंचे trees होते हैं, मतलब कितने मीटर तक हो सकते हैं trees? Can anyone tell? अपन ने तो 35. ये सागौन के पेड़ देखे, दैट इज द टीक ट्रीज, इज इट? उसके अलावा और भी बहुत ऊंचे ऊंचे ट्रीज होते हैं, उनकी हाइट कितनी तक हो सकती है? 50 से 100. 35 meter, 40 बस, meter. 50 to 60 8, meter. 70, नहीं, 80, नो 50 to मोर देन 60. दैट. नाउ आज 80 ना to 100. 100 meter. गूगल में सर्च करना कि टॉलेस्ट ट्रीज आर विच वंस एंड व्हाट इज देयर हाइट. ओके, एंड देन टेल मी नेक्स्ट पीरियड. ठीक है, मतलब इतने ऊंचे तक आप समझ सकते हो कि रूट से, सॉइल से इतने ऊंचे पेड़ तक वाटर और मिनरल्स पहुंच जाता है, इतने हाइट तक. तो कैसे पहुंचता है? मैम 91 meters तक. 91 मीटर्स. ओके, ठीक है, अच्छा सर्च कर लिया. ना मेरे में 115 दिखा रहा है. हाँ, नाइन. हाँ, Yes, ma'am. ओके ओके. 300 feet. हाँ हाँ. Yes, ma'am. 90. हाँ, तो आपको Yes, समझ ma'am. में आ जाए. With this much height, the water minerals have to be pulled up, isn't it? तो मतलब कुछ तो प्रेशर होगा तब तो जाके इतना ऊंचा तक जा पाएगा पानी. तो पानी प्लस दिस मिनरल्स. ओके, so now remember for that ना the pressure is there. Now how that pressure is developed and how that transportation is going on, इसके लिए आपको तीन टर्म्स याद रखिए: cohesion, adhesion, tension. Now, what is cohesion? Try to understand, children, what is cohesion. So, cohesion, it is, or the cohesive force. Okay, cohesion, that phenomenon, what is it? It is the pressure or the force exerted, cohesive force you can write down. Cohesion will develop the cohesive force. Will develop the cohesive force. And what is this cohesive force? That is the force exerted or developed between similar molecules.
ठीक है, मतलब क्या, वाटर वाटर एक दूसरे से वाटर मॉलिक्यूल स्टिक हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स। ओके, नाउ द सेकंड वन, तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स हो गए वाटर मॉलिक्यूल्स, तो दे विल स्टिक टू ईच अदर। So due to the cohesive force, you find the water molecules will stick to each other. Now the other one is adhesion. So what is adhesion? Adhesion phenomenon, that is, that will develop, मतलब क्या है, the property of sticking of the two dissimilar molecules. Okay, so the force exerted, that is adhesive force. What will be the force called? Adhesive force. So cohesion will result in the cohesive force. Adhesion phenomenon will result in the मैम, adhesive. प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग नॉन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। Ah, okay. The dissimilar or the different molecules, you can say, that is known as adhesion. Yes, आपको पता है अपने फेविकोल के बॉटल्स पर लिखा रहता है एडहेसिव, यू हैव सीन और नॉट? Yes, ma'am. हाँ, तो यस एडहेसिव मैम। है क्योंकि अपन उसको दो दूसरी चीजों को चिपका लेते हैं, पर अलग अलग चीजों को चिपका सकते हैं। ओके, सो डिसिमिलर थिंग्स कैन बी स्टक टुगेदर। तो दैट द फोर्स जो दोनों के बीच में रहेगा उसको अपन बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। ओके, सो नाउ किन दिस दोनों के बीच में मैम? दो डिसिमिलर, अब तो यहाँ पर अलग मॉलिक्यूल। इस इधर पर समझो, इट इज द फोर्स ऑफ attraction exerted between water molecules water molecules and the, can anyone tell that this process is going on through blood, with which tissues? जाइलम। Xylem. जाइलम Xylem. टिश्यू। Okay, can you name the elements of the xylem? We did in ninth. Very good. जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम हाँ, फाइबर, हाँ, और तो ये दोनों ही नॉट हेल्पिंग डायरेक्टली इन द प्रोसेस, ये तो सपोर्ट वाले हैं। दो मेन एलिमेंट्स तो मैम वो बोल, सीड सीड Tube. प्लेट था, सीड ट्यूब सीड। जाइलम। Tracheids and vessels. ah, very good. Tracheids and vessels. Okay, so you remember that the adhesive force will be exerted between the water molecules and the xylem vessels. Okay, and tracheids. Xylem vessels and tracheids. Understood all of you all? Yes, ma'am. अब इसके वजह से क्या होगा, अब बात को समझ लो। द ट्रैकीज एंड वेसल्स, दे आर तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, extending from the root till the top of the plant. Okay, and once the water and minerals, that is the sap, diffuses into the blood, diffuses into your roots, you find it will come into the xylem vessels and tracheids. अब xylem vessels और tracheids में जैसे ही sap आएगा, तो that sap, that is the water minerals, will stick to each other, as well as they will stick to the tracheids and vessel walls. ओके, जब वो वॉल से चिपक जाते हैं तो you find a continuous water column is formed. क्या याद रखना है? These forces, these forces help in formation of continuous water column. Continuous water column. Okay, due to the cohesive force. So now try to understand. मैम, एडेसिव के कारण वाटर कॉलम बनेगा ना, क्योंकि वो स्टिक कर जाएंगे। हाँ, साथ में वाटर आपस में भी स्टिक हो जाएंगे। सो कोहेसिव, अच्छा, वाटर आपस में होना कोहेसिव है। हाँ, बिल्कुल। ओके, एंड देन उसके वॉल से स्टिक हुआ तो वो हो गया एडिसिव फोर्स। So these two forces are helping
in the formation of a continuous water column. कहाँ पर water column? In the trapezial vessels. Okay, now what will happen? The transpiration is continuously going on. Transpiration is occurring there. Leaves, stomata. Leaves, okay. The leaves are continuously losing the water. And then the transpiration will take place. So remember that will develop a suction pull. That will develop a Suction pull. suction pull. And that suction pull is known as the transpiration pull. उसी suction pull उस suction pull को क्या बोलते हैं? Transpiration pull. ट्रांसपिरेशन पुल. Transpiration pull. हाँ, okay, okay. So someone is reminding that time is less. मैम Okay. सक्शन पुल हाँ. क्या क्यों हुआ, क्या है? Now I'm saying, I'm writing. You note down. Okay. Continuous water column कैसे बन गया ये समझ में आ गया? यस मैम. हाँ. Now we have to understand column तो बन गई, लेकिन उतने ऊपर तक वो पुल कैसे होगा? Water till the leaves. So for मैम that बट वाटर तो चिपक गया, अब वो जाएगा कैसे? आप चिपक गया वो तो कॉलम बन गई. अब इसके लिए ना एक चीज समझ लो. डिड यू एवर ट्राई टू टेक आउट द पेट्रोल फ्रॉम योर बाइक योर व्हीकल? तो क्या करते हैं आप पता है ना? एक पतला सा पाइप Take out लेते हैं. petrol. पतला पाइप लेते हो आप और उसको सक करते हैं एक बार, तो पेट्रोल आने लगता है. फिर आप किसी भी बॉटल में किसमें भी उस पाइप को डाल दो तो वो कंटिन्यू फ्लो होता रहता है. यस मैम. हाँ बॉयज यस मैम. मैम वो तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है. बॉयज वो आर नोइंग. पर बॉयज हैव एवर ट्राइड? किसी को पता है ऐसा होता है? मैम यस पानी मैम की पता टंकी है. में से पानी निकालने हाँ, वाला. पानी की यस टंकी से मैम. बहुत पानी चुराया है मैम ऐसे. पानी निकालने के लिए भी एक बार आप उसको खींच दो, पानी सक कर लो हाँ. और छोड़ दो, फिर वो बहता ही रहेगा, उससे पाइप से आता ही रहेगा. वही यहाँ हो रहा है. ओके, जब आप उसको सक करते हैं ना, तो यू नो दैट दैट वाटर या तो पेट्रोल ना, it sticks to those walls of your pipe as well as they stick to each other and continuous column is formed. That is the capillary action starts. ओके, तो वो फिर कंटिन्यू और साथ में प्रेशर सक्शन पुल तो डेवलप हो ही गया रहता है, तो वो कंटिन्यू फ्लो होता रहता है जब तक कि अपन उसको ब्रेक ना करें. ब्रेक करा मतलब बीच में कि एक एयर बबल आ गया, तो फिर वो जो कॉलम बन चुका था जिसके कारण ना वाटर कंटिन्यू फ्लो हो रहा था, वो सब स्टॉप हो जाएगा. तो सेम प्रोसेस इज गोइंग ऑन चिल्ड्रन इन द ट्रैकिड्स एंड वेसल्स. ट्रैकिड्स एंड वेसल्स भी फाइन ट्यूब्स ही है, थिन ट्यूब्स ही हैं. उनके अंदर से एक बार पानी बहना स्टार्ट ऊपर हो जाता है चलना, तो वो कंटिन्यू चलता रहता है. ओके, और क्यों चलता रहता है? क्योंकि वो वाटर कॉलम तो बन चुका है. ओके, एंड द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन थ्रू द लीव्स. नाउ लीव्स में ऊपर से प्रेशर कम हो रहा है, मतलब वाटर कम होता चला जाएगा. सो दैट इज व्हाई अ सक्शन पुल विल डेवलप. Suction pull develops. You will say the suction pull develops due to transpiration. Due to transpiration, and this is known as what? Transpiration pull. Okay, transpiration called. I have to leave you na, class है next ना आपका, isn't it? yes. हाँ, transpiration. देखो what I have written. Transpiration. Okay, so called due to transpiration, so it is known as the transpiration pull. Which pulls the water. Which pulls the water till top of the plant. So now I end up the class, children, and इसको एक बार read करना, समझना, and then next period I'll take it again. So how many students have understood
this process. All have noted or not? Yes, Yes, ma'am, ma'am. noted. Yes, Everyone, ma'am. Yes, ma'am. should I wait or can I stop sharing? Ma'am, Ma'am, they can. stop sharing. Okay, I can stop now. Yes, ma'am. Yes, Anyone ma'am. needs to be? मैम स्क्रीनशॉट ले लेगा जिसका नहीं हुआ होगा. हाँ हाँ ठीक है ना, हाँ जिन लोग मोबाइल से हैं तो स्क्रीनशॉट तो क्विकली ले सकते हैं, पर ये है वो स्क्रीनशॉट ही ना रह जाए, कॉपी में भी आ जाए बाद में, नहीं तो पता चला वो स्क्रीनशॉट ही और कहाँ चला गया तो पता ही नहीं. ओके, दोज चिल्ड्रन हु डू दैट बाद में भी कॉपी खोल के बैठ जाया करिए और मोबाइल. ओके. Yes, ma'am. हाँ, so now we have completed with the transportation in plants, and that was the first one, that is how the water and minerals will be transported. Okay, so water and minerals transport is known as Xylem. Sap. known as Ascent of sap. ascent एसेंट of ऑफ सैप. ascent of sap. Okay, Karthikeya, now I'm reading. Okay, it's too late. मैम चलो. जैसे हाँ टाइम क्रॉस बोलिए. होता है ये दोनों हाँ. What? ये एकलव्य और कार्तिक ये रामवर दोनों मैसेज जाते हैं. करने लगते हैं. हाँ हाँ चलो ठीक है. वन मोर पीरियड विल गेट इट इन दिस वीक ना, तो अपन कंप्लीट कर लेंगे. तो नेक्स्ट वीक मतलब इस दिन तक आपके तैयार हो जाएगा ये ट्रांसपोर्टेशन, इजंट इट? हम्म. ओके, सो मच दे आर राइटिंग ऑल दैट. मैम विल डू. हाँ हाँ स्नेहा. मैम वो सिस्टोल और डायस्टोल की स्टार्टिंग कैसे करनी है थोड़ा बता दीजिए. अब वो डायरेक्ट नेक्स्ट ऐसे लिख सकते हैं द नेक्स्ट पीरियड कॉन्ट्रैक्शन फेज. नेक्स्ट पीरियड में यू कॉल मी, ठीक है, आई टेल यू. ओके. कॉल. हाँ यू कैन कॉल ना. अच्छा ठीक ठीक है मैम. है. ओके, देखो ना क्लास का टाइम हो रहा है आपका, तो शांति पाठ कर लेते हैं. देन यू हैव टू जॉइन देयर आल्सो ना. ओके मैम. शांति शांति शांति. साईराम चिल्ड्रन. एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क चिल्ड्रन यू कैन कॉल आल्सो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन कॉल, ये अपना क्लासेस का टाइम बस छोड़ के आप कॉल कर सकते हो. ओके, यू कैन लीव नाउ. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Sairam, ma'am. साईराम Sairam, ma'am. Thank you, ma'am. साईराम. Thank you, ma'am. Saira, ma'am. साईराम.